हमारे साथ we have one. Okay, it's got, this person came yesterday also by the name of Unit Scam, but I don't know. Let's wait.
अजय जी, आपको स्ट्रीम में ज्वाइन किया है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, तो ही आप बात कर पाएंगे हमारे से। अजय जी, अपने माइक को अनम्यूट करिए और बात करिए।
अंकित जी, आपने ज्वाइन किया है बट आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। बेसिकली आपको एक हेडफोन जो होता है ना, जो हम मोबाइल में लगाते हैं, जिसमें हेडफोन और माइक होता है, वो आपको आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे लगाना है और फिर आप रिजॉइन करिए ताकि हम आपको स्ट्रीम पे ऐड कर सकें। अनवर जी, अनवर जी प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करिए आप। अनवर जी अपने माइक को अनम्यूट करिए। अनवर भाई अपने माइक को अनम्यूट करिए प्लीज।
सिनन जी, आपने स्ट्रीम ज्वाइन किया है, अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके माइक को अनम्यूट करिए। सिनन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाय, हेलो। Yes. Hi, Gurpreet. हाय, टेल मी। सिनन जी, वेयर आर यू फ्रॉम? From Bangalore. ओके, फ्रॉम बैंगलोर। हैव यू read I the think you might have topic? seen my comments earlier. I think couple of years back, it was an article uh, which was released from Bombay High Court, and there were so many comments, and that's where I initially had a conversation with you. Okay, okay. Nowadays, what has happened is because I'm not keeping quite well, I was not online for quite a few months and not able to follow up. Hmm. Sinan bhai, have you read the today topic, the analysis of the BBC news article on hashtag QNS scam? I have not gone through it completely, but I just got a message in one of the WhatsApp group that there is a session live stream which is happening right now. Yeah, actually, these we just started doing this live streams on trial Hmm. basis. In coming days, we'll be have some very good like-minded people like lawyers, prominent activists, and jurists. We have one more Yeah. caller. Just let me add him or her. Yeah. सुमा जी प्लीज आपने आपको आप अनम्यूट करिए। सुमा जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ, सिन्हा जी बोलिए। So we have just taken a small baby step. We are trying to speak to people across India who have some grievance against QNet or who are also in favor of QNet. Most matlab, even people who want to favor QNet or they think it is ethical, it is correct, they are also welcome to come and have a debate. Hmm. I mean, it's a good initiative because I do see that certain steps are being taken in certain states. If you ask with me that Telangana and Hyderabad have very strict rules where the commissioner is actually saying it on public that you know the entire state or that particular prominent doesn't need any kind of uh, fraud MLM schemes like how QNet is operating. Now, if you Yeah. go to see that, I mean, I am an analyst here, so I do understand on what basis Chinanji, they I speak. totally agree with what you're saying, and that is one reason that I don't know. Matlab, if you see the thumbnail today, we had put the thumbnail of that sir, Sajnar sir, as we Hmm. very fondly call him. But at least he's an Iron Man fighting against MLM frauds and scams in India. Exactly. Correct. And, I'm agreeing with you on this because what I was trying to convey you, sir, is that like him, if there are other commissioners, like at least I'm grateful that from our point of view in Bangalore, we initiated a step called as we most of the victims we circulated messages and created groups in WhatsApp. But what happened was ultimately only certain, I wouldn't say, I don't know the exact number, but in a proper fractional point of view, I would say that upmost to 600 plus victims across Bangalore, as well as the outsiders who visited Bangalore, got the Mhm. news that CID Bangalore is taking up a case, and Okay. they tried giving a complaint. And the same thing started happening in Chennai and other south states. But the problem, what is happening is the victim numbers are not as much as in the supportive way for like how the QNet scamsters are working. Now, in my point of view, in simple words, what I would say is everyone does know for the fact that this is a proper pyramid scheme. If you just have an elementary school education, you don't have to go ahead and dig your head so much to say that, okay, this is not a scam and this is yes. Mhm. And the other thing, what I've seen in Bangalore is because of this COVID outbreak, this was an Okay. added advantage to these people. So previously, what was happening in Bangalore is most of these people were openly, giving their business, saying that they don't need an infrastructure to run a business, Okay. and they used to use cafe coffee days as their means to convey this scam.
But then what happened is there were people who were going like me. Now I am a very fond Kannadiga, as well as I represent my country for a reason, and I have all my rights to go ahead and stop when I get to know that it is a scam. एटलीस्ट नॉट मेरी तरफ से मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, ये जो आप जो इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लोग फंस चुके हैं और कोई लोग तो जान भी दे चुके हैं. सो pardon my Hindi because I'm not that great in speaking, It's but okay. Okay, if you there you is, can continue in English. We are very fine with that. Please continue. yeah, Please continue. Your what yeah, you are talking is very sensible thing, and I am very happy. Please proceed. Please proceed. yeah. So I have done my own research and analysis because I do know for the fact that certain number of QNet activists who are actively still hiding their faces, like the actual Zionists in the world, they are hiding their faces in Bangalore, somewhere in some corner, and they are doing this business. And I also know for the fact that they're, हम बोलते हैं ना जासूसी जासूसी, Yeah, yes. those guys are also there in the WhatsApp groups to give information to their top higher people. How did I get to know this? Is because I do have certain friends who were not able to, or they didn't have the means or means to go ahead and give a complaint to a higher authority. Reason being is they don't have the guts to go ahead and speak. I understand not everyone has that thing to go ahead and speak, but what I go ahead and tell to them is, when you have approached QNet and when you have given your hard-earned money, when you understood, you realize that it is a mistake, why don't you take a step forward and go ahead and use the official Indian authorities to say that it is a scam? Because this is not only a scam in India, in fact, it is an international scam. I also Mhm. see certain news feeds from third world nations like Africa, Yeah, yeah. where some people have literally posted that it is a scam. And if you're a businessman, matlab, if you're a businessman, you know how cash flow and money works, whether it is a Yes. traditional business or if you have an empire of business. It is a simple basic where in every financial year we should show certain amount of documents to the government stating that this was my assets, this was my capital, this was my liabilities, and for the mistakes what I did, this is what I'm paying the fine for, right? Yes. But Right. QNet is not having all these things. What do? They say that we are tied up with Ministry of Corporate Affairs, wherein they just googled this term, they don't know the meaning of Ministry of Corporate Affairs. And to end the topic, what I ask with them is, if you say that QNet is a legit business, now for example, I have a business firm, a very small shop, I Okay. own a pawn shop. Okay. I circulate it in internet that I have 9 to 10 types of pan which I sell it. Okay. Genuine, no problems after eating it. Sugar patients don't have it. I have my clause. This is the price. This is what is going to happen. This is the taste. We Okay. already know that QNet has already performed so many fraud activities where they also said biodisc can cure cancer, which is completely not, right. And Uh, there were uh, victims from regarding, biodisc. yeah, I know. That is where everything started from actually. Yes, and the other thing is, now that I am an analyst, से देखो आपका एक एनालिसिस आपकी तरफ से सबको, you Gurupreet is something like like when you say that the commissioner of Hyderabad is an Ironman, for other people you are the Ironman, right? Because they see you because you started this moment. Now why did I join the call? I really wanted to put my heads up here, and what I would like to say is simply, uh, just to prove that we don't need an analysis. I mean, if you have seen or if you have spoken to any QNet officials, did they even come live on any kind of call? They will not come. वो जो वेडनेसडे में वो आता है ना वीटीवी में, वो एक हाँ, बंदा है, हाँ. पोकता रहता है, हाँ वो बंदा नहीं आता है. He will not come. We call him cheat And Senati Raja. करेक्ट, उसका नाम भी मैं याद नहीं रखता हूँ बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज. No, वंस अ this unit चीटर people ऑलवेज अ refer to चीटर. him as chief. We say cheat Senati Raja.
और वो मैं उसका नाम याद नहीं रखता हूँ बिकॉज माई फंडा इन पॉलिसी इज whether a person outside, if he's selling coconut tender water, if he's doing a legit business, he's earned his respect. Yeah. These kind of scammers, you don't even have to call their names. For what joy? So many people have suicided their lives. Aren't these people aware of it? And they're still doing it. And what I was saying earlier was these particular kind of MLM schemes, they have targeted certain books. All those books, what they have been given is not a study material for a business. Those are all imaginary figures what they are saying it. वो बुक पढ़ने से आपको बिजनेसमैन यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन you cannot become a businessman. There are two probabilities. They don't say the complete information. And whenever you try to invest into any kind of unit, whether Oceans or Infinity, they don't give you the information which is related to the refund policy. And they also don't say that there are two types of investing the money, one in INR and in the US dollars, and also the products. So they don't have a Sinan bhai, proper feasibility. can I interrupt here for a minute? Yes. Suppose someone is taking money from you in INR Hmm. for for whatever scam or whatever. It's Hmm. understandable. But someone Hmm. is taking money from you, Hmm. but purchasing a so-called product on your Hmm. behalf, Hmm. bypassing the entire machinery in India, Hmm. like GST, this, that, everything they are bypassing, and then they are saying, Hmm. "Okay, I bought a holiday package for you from whatever gold or diamond or whatever holiday package, and this is the Hmm. package, and there is not a single penny, not they have not paid any taxes. They have bypassed the entire Indian machinery. Hmm. So, is it what is it? Is it money laundering or not? Sir, I'll ask you a simple question. Take Okay. care. Please be genuine in your answer because Yes. I am genuine from my end. Okay. We have one Mr. Rohit. Let me add him, please. Yeah. Yeah. रोहित जी वेलकम। और एक हमारे साथ किरण जी है, किरण जी को भी ऐड करते हैं। या सिनान भाई प्लीज कंटिन्यू। Okay. I'll give you a simple example. I just want you to answer from your end. If you're not able to understand what I'm trying to convey, please stop me. I'll explain you again. हम सबको पता है every country has their rules and regulations. In simple terms, we can say do's and don'ts as Yes. per the law. Yes. Now we all clearly know that in India, selling marijuana, which is nothing but ganja or any kind of drugs, which can intoxicate people, Hmm. is prohibited. Yeah. Correct? Correct. Correct. Okay. Now, does that mean that in India, people are still following the law, or they aren't they still doing it? Yes, yes, they are doing it. Correct. So the same way, these tuned people, what they are doing is proper money laundering. In fact, what I would say is it is a cash inflation fraud. They Okay. are saying that they are going to give you a holiday package, but Mm-hmm. you're not getting those details at all. I'll give you a simple, very simple example. Please, आधे से please. मतलब most of the people who join QNet, they don't have permanent houses, but yet they give their Aadhaar card details where most of them are they either stay in rented apartments or a Or they lease are owned apartment. sharing with someone. Yeah. Correct. Correct. Now the package what you have received it from QNet or whatever you have ordered, when that package was arriving into your face in whatever form, I have not seen it. And if you're not there in that particular property, that entire package and the money is still gone to the bank which is located in Singapore. And Yes. the laundering place is happening from India and they use something called as e-cards. If Yes. you go ahead and check your transaction in your particular bank statement, this will go ahead and trace it to e-cards. But the person who created e-card is a proper scamster who is working in Singapore.
because in their country they are allowing to do this scam. So मतलब it is even Netherlands में no, I'll Niranji, continue. just one minute. When I was Yeah, fighting this scam in keywords, actually I was arguing against this also, e-cards also, correct. because these QNet people, they had their biggest lawyers, where they are charging 10 lakh rupees per day appearance for one appearance. So I Yes. had argued upon this, कि if they are actually taking Indian money and Hmm. issuing e-cards, Hmm. so effectively they are running a they are running a parallel currency in India against the Indian rupee. Please, please, now you say. Virtual scam. You can say cash flow virtual scam Okay. because this particular scam is happening through internet basis, and we are not able to see the transaction. The only way we can see the transaction is through the e-card reference number. And who is holding the entire e-card capital? Someone from somewhere and somewhere in QNet. Someone And that sitting in particular Malaysia is doing it, or in Hong Kong. someone We don't. sitting in Malay, वो पता नहीं है कि वो मलेशिया में है क्या सिंगापुर में है. That's what I was trying to tell them. Okay. 4 to 5 times, 5 QNet officials, they even tried to attack me. Okay. Only for this particular question and for my analysis. गुरप्रीत जी बात ये है कि Yeah. we will talk. We know the means to prove that QNet is wrong. My Yes. simple ask with my fellow Indians all over this country, whether a tier one city like Bangalore, Hyderabad, Chennai, you name it, Cochin or Vaisakapatnam, Mumbai, Pune, you name Indore, Delhi, Kolkata. So these are the main places where these guys have set up and they have hidden their identity, right? Only if these cities and the victims come out, I can guarantee you by saying that more than 1.5 billion money is taken out from these innocents. I will write it in a white paper because this is a proper cash inflation fraud. And the business analysts who are there in QNet, they are no more working because they all got their money back and they have settled somewhere in Australia or New Zealand. I can write it. If you see the books, their books itself will teach you to make the scam. मतलब मैंने उनका बुक्स भी पढ़ा हूँ. वो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ही उनके साथ मैं क्वेश्चन करने के लिए शुरू किया. पागल नहीं हूं मैं इतना सब कुछ Yes, क्वेश्चंस yes. पूछने के But लिए. Sinan bhai, I don't know if there is any book for matlab whatever they share with the IRs, IRs. Hmm. Those are normal common books. Like if you come to Mumbai and you go to a railway station, no, you find Hmm. those books being selling on the footpath for 50 rupees. करेक्ट. That parable of सर जी pipeline, that ये तो poor guy. वही बात हो गई ना. करेक्ट. नाउ इफ यू आर रनिंग अ स्कूल, whether it is affiliated to a state university or if you have a private board, right? If you are Yes, owing that particular university and if it is not deemed, you have all the rights to go ahead and ask the state authorities that okay, fine, this is my university. I want the curriculums to be like this, and I want the students to learn like this in this particular standard. This particular standard, this one. This particular standard, this one. QNet वालों ने ये सब पहले से they have done the analysis that in order to frame and fool these people, we should give only the selected books. मतलब दुनिया में और भी अच्छा अच्छा business books है wherein yes. that can enlighten so many people. Why isn't Okay. those books given? Why only selected books are given? This is my question to them, and they don't have the answer. Now, if I ask you 2 plus 2 is equal to 4, you still say it is 5. We all get to know that you know the answer, but still you're hiding the identity, right? The same thing here. They say that book magic, right? It gives you so many insights and it will change your life. Theoretically point of view, it's just a book which is written in 1700s just to enlighten the people when the Zionism movement started. That has nothing to do with MLM scheme. Which book are you referring to, please? There is a book called as Magic, Secret or Magic, something. I've read that Secret, book. Yeah. Secret, secret. yes, yes. 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 Now, if you go to the author's notes or if you do a deep check in Wikipedia, that book has nothing to do with the business. मतलब मैं इधर I am doing an administration work as a consultant for a particular pharmaceuticals company.
मैं आप लोगों को बुलाऊंगा काम के लिए, सब कुछ करूंगा मैं. End of the day, I say that okay, you're working for a pharmaceuticals company, but what you do is you do customer service job. How is that possible? You understand what I'm trying to say? Now Yeah, these yeah. people say that in this business you don't need to have a raw material. Business doesn't need to have a raw material. How is that possible? And you अगर don't need venture to में have an capital, office also. You don't need to do anything. they don't even have a proper infrastructure where a person can show an identity. मतलब मैं अगर एक आधार कार्ड या कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर कंपनीज में अगर टाई अप हुआ हूँ, नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, I would need to go and have a place or a desk in a government affiliated infrastructure office, right? वो Yes, आधार कार्ड का डिपार्टमेंट हो या पैन yes. कार्ड का हो या कुछ भी हो, इनका वो खुद है नहीं. दैट इज नॉट देयर ओनली. नाउ Sinan हाउ ji, कैन यू से दैट? can I tell you? Can I share something with you? यस. If you, since they talk about the Ministry of Corporate Affairs and all those things, so if you go to the website, you will find a registered address for QNet. That is through Vihan Direct Selling India Private Limited in India. And if you go to that address in Bangalore, there is just one table and one chair and one security guy and one receptionist. That's all. सर अभी वो भी नहीं है. अच्छा वो भी नहीं है. I don't know. It's been long time I have not gone to I, Bangalore. I, I am giving you an updated version of it. अच्छा. Now even that is also not there. And also an additional information I'm giving it to all you guys, including Gurpreet Sarji, is that now the way these guys are operating is very cruel, and they have come up with innovative ideas. Previously, they were operating in cafe coffee days. Now, Okay. what they have done is they will contact their third higher tier one person. मतलब आपके चेन में, मतलब आपके ऊपर के ऊपर, the third person who's on top of you, who is literally looking at one particular team, right? They have rented some apartments in very remote located areas in Bangalore or whichever cities you live in, Okay. and they started doing the business again. Reason being is most of the cafe coffee days have understood that these guys come, toggle their ass for 8 to 9 hours, take one cafe cappuccino and don't eat anything. कैफे कॉफी डे को भी लॉस है. ये लोग बाहर जाके, मतलब they don't eat anything from the cafe coffee day. They only drink one coffee and they go and eat from outside. And 9 hours they'll be simply I- enjoying the AC. if I believe, even that one coffee is ordered for the prospect, like the person whom they have called, the Bakra. हाँ, मान लो कि वो जो बंदा prospect जो उधर गया है, he is a highly sugar patient and he's got minor heart attack as his major symptoms. I'm Okay. just saying, not reality. वो कॉफी भी गया ना. Hmm. What is the use of drinking that coffee? It is like a person's want. Now, these people say you don't need to have a proper venture capital or a raw material. You can use your Facebook friends as a raw material for this business. Aren't these people going against Facebook? Sinan bhai, it is very nice talking to you. आप stream छोड़ना नहीं. You just stay back because there Yeah, are other people who might be who might, they might want to talk. yeah, I yeah. want to Sure, sure. welcome Mr. Rag. He's a hardcore activist. But some problem because he's like doing a job. मिस्टर राग, आप अनम्यूट करिए. सतीश जी अनम्यूट करिए. और कौन है? रोहित जी अनम्यूट करिए. Yes, Satish. Sir, please give me a few minutes. Okay, I बोलिए. just again got into traveling. So I'll unmute 2 minutes and I'll speak. Okay, I'll just settle down in my seat and then I'll join. Okay. राग जी, राघव भाई, आप हो तो बात करिए प्लीज. Yeah. I'm only telling just to give me a few minutes. I will join in few minutes. Okay. I'll be online, but I'll be in mute. I don't want to give any disturbance in between. एक सतीश जी है, ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से ही है. सतीश जी, आपने Yes, बहुत मैं बार महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ. हाँ, आपने बहुत बार मैसेज किया था फेसबुक पे. Yes. I'm very sorry Yes. we could not reply that time. Never mind, sir. I was not well. I was मतलब
down with jaundice for 4-5 months, so I Okay, could okay. not do anything. So I'm very sorry for that. सतीश जी प्लीज Never mind, हमसे sir. नाउ स्पीक, अब अभी आप शेयर करिए ओके आपको सर। क्या यस प्लीज। यस सर, क्या हुआ था ना, मेरा एक दोस्त था जो बैंगलोर में है, और वो बाय प्रोफेशन ही इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और वो बंदा जो है मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्स में मिला था, बैंगलोर आश्रम में। तो फिर ओके अभी तो कभी कभी ऐसी बात होती थी, लेकिन फिर डिस्कनेक्शन था। अभी लास्ट फिर कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कॉल किया, और वो जो स्क्रिप्टेड था जैसा पूरा वो स्क्रिप्ट उसने मुझे पूछ लिया। आप कैसे हो, भाभी जी कैसी है, बच्चे कितने हैं, क्या है, कौन सी स्कूल है, क्या है, कौन सी क्लास है, ये सब चीजें जो सिखाते वो सब स्क्रिप्ट उसने मुझसे पूछ ली। फिर वो ओके बात करते रहा, और फिर उसने कहा कि मैं भी एक बिजनेस चालू किया हूँ, बहुत अच्छा है, और बिजनेस जॉब के साथ साथ वो भी चालू है। तो मैं बोला यार ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर मैं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो साइंटिस्ट होने के बाद भी ये बिजनेस कर रहा है तो अच्छा ही होगा। और उसने कहा कि भाई, और बहुत बढ़िया चालू भी है और अच्छे से इनकम हो भी रही है। तो फिर हाँ मैंने तो उससे पूछा चालू क्या है क्या नहीं। तो सतीश जी उन्होंने आपको झूठ थोड़ी ना, उन्होंने सच बताया ना आपको। तो तो उन्होंने झूठ ही उन्होंने सच था बताया क्योंकि कि नहीं, सच बताया चालू बिजनेस है वो, तो उन्होंने सही बताया आपको। नहीं, उसने कहा कि कपल ऑफ ईयर से अभी वो जुड़ भी गया है, और इनकम उसको अच्छे से इनकम भी आ रही है। लेकिन रियलिटी ये थी कि उसका फैमिली के बाद मैं ही एक ऐसा था जो उसका डाउनलाइन जो मैं था। तो फिर ओके ये सब चीजें थी जो झूठ थी। और उसके बाद में ये सब राघव चीजें भाई मुझे तब वेलकम बैक, वेलकम बैक। प्रोस्पेक्ट और अगर आप सेटल हो गए तो अनम्यूट करिए और बात करिए। वो Uh, uh, प्रोस्पेक्टिंग के I, टाइम जब बताया गया था कि मुझे भी ऐसा ही करना है सब, तो उसका सब मैंने जब देख लिया डेमो, तो मुझे लगा यार ये तो सब चूतिया बनाने का मशीन है। और इन लोगों को मैंने पूछा था कि ये नेटवर्किंग मार्केटिंग तो नहीं है ना, तो उसने मुझे कहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लेकिन उसका आखिर तक ये देखने के बाद मुझे पता चला कि ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग है, और ऐसे झूठ बोलना है, सबको फंसाना है। तो फिर मैंने उससे कहा कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो उसने कहा यार पैसे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी केस भी डाला हुआ है उस पे। अभी 16th, आने वाले 16th को उसका वेरिफिकेशन है नहीं, कोर्ट में। सतीश जी सतीश जी सतीश जी, हम्म ये जो एक रिक्वेस्ट है कि जो हम्म प्राइवेट डिटेल्स है ना, पर्सनल डिटेल्स है, ये शेयर मत करिए। क्योंकि देखिए ओके। कोई भी हम्म ये स्ट्रीम पब्लिक में कोई भी सुन रहा होगा ना, तो हम्म आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं तो आप उसको डिस्क्लोज करके क्या होता है फिर सामने वाला पता नहीं उसको क्या किसी नहीं तरह मैनेज करने देखेगा ना, नहीं, इसलिए। मेरा ये पर्पस था कि ये और डिस्क्लोज करने के पीछे कि हाँ जी। शायद आप लोग मुझे इसमें हेल्प करेंगे कि एग्जैक्ट मैंने क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने ये एक्सपोज किया बस। सतीश जी, आपको जो भी यस। लीगल हेल्प चाहिए हमारे एसोसिएशन हम्म। से, किस तरह हम्म, प्रोसीड करना है, कि पुलिस केस हाँ। कैसे करना है, अगर पुलिस एफआईआर नहीं लेती है तो क्या करना है, हम्म। ये हम सब आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। पूरा टीम है, हमारे पास ओके। ग्रुप है। ठीक है। हम्म। मेरा कुछ ओके। डिफिकल्टी था, जैसे मैंने बताया, मतलब हेल्थ का इश्यूज था, तो उसकी वजह से मुझे हम्म। ये पिछला ऑलमोस्ट 1 साल मैं मतलब कुछ कर नहीं पाया इसके लिए। तो जितने ओके। विक्टिम्स हैं और एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मैं सबको सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। बट मेरी भी मजबूरी थी। बट सिंस हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, सतीश जी आपको जो भी हेल्प लगेगी, मैंने आपको आज हम्म। पर्सनली सामने से व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने मुझे कॉल किया, आपने यस मुझे ये बताया कि यस ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको सामने से मैसेज करके कॉल करके आपको सब बताया। सतीश जी, यस जो यस। जनरल जनरल बात है ना स्कैम के बारे में, वो करिए आप। हम्म ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हम्म स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक बात, मतलब मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी को, मतलब जो भी ये स्ट्रीम सुन रहा है उसको लगता है कि मुझे मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट वो बात करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है हम्म आप अपना नाम रख के आइए। आप जब स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं डिस्प्ले के लिए। हाँ सतीश जी,
प्लीज स्पीक टू राघव जी। राघव जी, आप थोड़ा सतीश जी को हेल्प करिए कि लीगली कैसे प्रोसीड करना चाहिए। हाँ जी। हेलो ऑल, गुड इवनिंग। सो आपको पहला बात में एवरीवन आई वांट टू एनकरेज यू इज लाइक कीप as much evidence is possible with you. Okay. The first thing is like anywhere we go, they will ask you for the evidence. So get your evidence ready. सर जी, And all, कैन यू स्पीक इन हिंदी? हिंदी में हो सकता है क्या? आप बता सकते हो क्या? क्योंकि हाँ थोड़ा सा मुझे हाँ, इंग्लिश का इशू है। मैं प्लीज। कोशिश कर लेंगे। ओके, बट इफ यस आई यस। मेक हाँ। कुछ गलत किया तो थोड़ा फिर से क्वेश्चन पूछो। ओके, और थोड़ा मिस्टेक करने तो माफ कर दीजिए। ओके, मेरे को इतना हिंदी अच्छा नहीं आता। ओके। सर कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सके हाँ उतना ओके। प्लीज। हाँ, आपका आपका कौन सा एविडेंस है और विटनेस है उन लोगों को अगेंस्ट। ओके, आप तो सबको रेडी करना चाहिए। कौन सा दिन पे ट्रांजैक्शन किया, कैसा किया, और कौन सा बात करके वो लोग आपसे पैसा मांगा। ओके, और कैसा पैसा आपके साथ लिया। ओके, वो सब आप रेडी करना पड़ेगा। और पुलिस ओके। लोग मना करने तो एफआईआर करने के लिए। ओके, आप इन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप और फ्रेंडली रिक्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। और नहीं हो पाएगा तो आप किसी लॉयर को हायर करके मैक्सिमम 500 से 1000 रुपीज तक हो जाएगा। ओके, अभी क्योंकि राघव भाई, आई जस्ट इंटरेक्ट, मतलब मैं एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ सतीश जी, क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में आप कोई भी पुलिस स्टेशन में क्राइम रिपोर्ट करने जाते हो ना, जब मतलब कि ये मेरे साथ चीटिंग हुआ ओके। है, कुछ भी हुआ है, तो पुलिस है ना आपको बहाने बनाती है और आपका क्राइम रजिस्टर करती नहीं है। उसका कारण ओके। ये है उसका रीजन ये है कि जितना क्राइम उनके पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है ना, तो उतना वो डेटा में दिखता है कि इनके पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में इतना चेन स्नैचिंग हो गया, इतना मर्डर हो गया, इतना रेप हो गया, इतना स्कैम हो गया, वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली पुलिस का जो एटीट्यूड रहता है वो ये रहता है कि किसी भी तरह इनको आप मतलब बिना एफआईआर रजिस्टर करिए, इनको आप मतलब एक कुछ ना कुछ करके दे दो, ठीक है। और दैट इज वन रीजन, क्योंकि वो जितना एफआईआर रजिस्टर होता है ना, तो क्राइम का डेटा में दिखता है कि भाई ये क्राइम बढ़ रहा है इनके पुलिस स्टेशन में, तो ये केस रजिस्टर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप तो जैसे राघव भाई ने बताया कि आप एक लॉयर को अगर पकड़ोगे और 156(3) में आप आपका पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो। और मेरा एडवाइस तो वही पर्सनली किया सर। सबको, हाँ हाँ जी, और मेरा एडवाइस तो पर्सनली सबको ये रहेगा कि 156(3) में भी अगर आप जाते हो या पुलिस स्टेशन में भी जाते हो, तो लॉयर्स का हेल्प लीजिए, बट लॉयर्स के ऊपर अपना विश्वास मत रखना, बिलीफ मत रखना उनके ऊपर। ये मेरा ओके पर्सनल सर। ओके। एक्सपीरियंस है, पर्सनल एडवाइस है। बाकी सबके अपने अपने एडवाइस मतलब एक्सपीरियंस हो सकते हैं। राघव भाई बोलिए, आप बढ़िया अभी। हाँ ओके, थैंक यू। सो आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि अब अभी एक बार एफआईआर हुआ तो पहले आई थिंक वो कर सकते हैं, आपके अपलाइन पे कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं आप। ओके, वो आपके साथ इधर नेगोशिएशन किया रहेगा। और अभी नहीं हुआ तो पैरेलली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वो लोग हर बार स्टे लेकर प्रोसीडिंग्स पे आई मीन लॉन्ग प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। ओके, ऐसा ऐसा खींच रहे हैं उन लोग, क्योंकि हम लोग बोर हो जाएगा, छोड़ जाएगा, ऐसा सोच रहा है मेरा ख्याल से वो। ओके, सो हम लोग तब जाएगा नहीं, वो कभी तक वो लोग फाइट करेगा, हम लोग भी तब तक फाइट कर लेंगे उन लोगों के साथ। ओके, वो सब हम लोगों को गुरप्रीत सर के साथ रहना है। गुरप्रीत सर सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा है, हम लोग के अपने अपने सिटीज में फाइट करके अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि उन क्यूनट लोगों के साथ लोग हम लोग को कैसा नुकसान कर सकते हैं, हम लोग का रिलेशनशिप्स और मनी कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। एंड ये सब एकदम फ्रॉड है, क्योंकि उन लोगों का प्रोडक्ट्स बिल्कुल तो फेक है, वो तो सतीश, कंप्लीटली अनवेलेबल। गो एट गुरु जी। yeah, Satish ji, so whatever legal help you need evidence, you need documents, you need help with drafting or whatever, ओके। मतलब you can share your draft with us, we will correct it, we correct in the sense we can point out कि you add this वगैरह वगैरह। तो उसके लिए वी आर ओके सर। ऑलवेज देयर। हाँ, बीच में एक साल
थोड़ा मेरा जो वापस से हेल्थ का इश्यूज था, मैं नहीं कर पाया। सुशील जी अनम्यूट करिए, सुशील जी, सुशील भाई और सिनन भाई प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। सतीश जी आप व्हाट्सएप पे टच में रहना अपने साथ, स्ट्रीम आपको अगर रहना है तो यस सर, यस। रहिए। या क्योंकि आज का एक्चुअल जो टॉपिक है ना, थोड़ा उस पे बात नहीं हो पा रहा है अभी तक, क्योंकि जैसा मैंने मैसेज फ्लोट किया था कि बीबीसी ने आज एक न्यूज आर्टिकल किया है क्यूनेट स्कैम के ऊपर इंडिया में, तो उसके बारे में कोई बात करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट करिए और बात करिए प्लीज। हेलो गुरप्रीत सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं उन लोगों के वो लोग बीबीसी लोग हम लोग से इंटरव्यू लिया, और क्योंकि वो क्यूनेट लोग क्या कहते हैं, हम लोग का एसोसिएशन बहुत बड़ा पार्टनरशिप है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और सानिया मिर्जा और शाहरुख खान और अनिल कपूर, ऐसे सब बड़े लोग हम लोग का उसके साथ पार्टनरशिप हुआ, और वो लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्रांड को। बट ये सब फालतू बात है, वो कोई भी पॉसिबल नहीं है। सतीश जी मैं सॉरी आपको रिमूव कर रहा हूँ, मैं आपको, हम व्हाट्सएप पे तो है क्योंकि स्टूडियो फुल दिखा रहा है और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। आप बुरा नहीं मानना प्लीज सतीश जी, मैं आपको यस सर, मैं लीव करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम सर। हाँ बोलिए बोलिए। Okay. So, what I want to encourage you all is, okay, so talk to as many people as you can. Okay. So that way you increase your knowledge more, your awareness will also grow. Now, like a organization like BBC has produced some news with some interview with us. It is not an ordinary thing. Definitely, that will help us in growing that. So now that like we have said that like we got impacted and we got destroyed by QNet, you will never see any person, okay, come and speak against in the favor of QNet. Like we as a victims, as a group, represented that QNet is bad and it is fake and it is scam. So like us, from the QNet side, no one in India will come forward and speak in favor of QNet. This will be one of our biggest strengths. So if anyone needs any help in speaking to them, or with the BBC reporters, or with any of the local reporters or the local media, okay, please let us know. Okay, because we all know, as a victims, we all know like what are all they doing, what are they trying to do, and all that. Okay, so we can expose them and we can stop these people from scamming the people, and then we can help our fellow Indians. Okay, so that should be the whole objective, guys. So in case anyone needs any help with that, you can contact us. So like I also participated in that interviews, so I have provided as much information as I can. राघव भाई, एक हमारे पास में, हम इनको जानते नहीं है, इनका मैसेज आया था, इन्होंने मैसेज किया कि मेरे 50 लाख रुपए डूबे इसके अंदर, तो मैंने इनको इनवाइट किया कि आप आइए स्ट्रीम में जुड़िए। हमारे साथ हैं मिस्टर भुवन करके हैं। भुवन जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप प्लीज बात करिए। हेलो हेलो भुवन जी, हेलो, आवाज आ रही सर? बोलिए बोलिए भुवन जी, बोलिए सर। नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? आ रही है। नमस्ते, सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो? भुवन जी, Hi, Gurupreet. Apologies to interrupt you. I would need to attend a meeting with my team here. It was very nice talking to you, and I would like to keep in touch with you. Is it okay if I go ahead and share my number with you so that we can have a talk in sooner or later in the coming future? Sinan bhai, no? Yeah. Yeah, Sinan bhai, you can just look up my number on WhatsApp. In the Google, you'll find my number. Keep in touch, and please keep talking to us. It was very nice talking to you, and we want to actually understand about your analysis. Please. Sure. I thought of actually coming up with a plan where we can schedule a meeting only between ourselves, not more than 20 to 25 people. I have my certain friends who have done their own kind of analysis where they can, we can be helpful of whatever means what we can do.
and we have our own ways of speaking it and telling it. Because I do get the point, like what earlier person said, we have to go ahead and speak with as much as people as possible, so that we can get many insights, and we can, try to come up with a strategic plan to stop this complete nuisance in all over India. So I'll just in the chat room, I'll just ping my number, and I'll also try to find out where your number, and please keep in touch. Let's see what best can be done to this. Okay. And it was nice talking to you guys. And I'm very sorry that I have to leave because I have to support my team. I'm kind of doing a European shift right now because I've quit my earlier job, and right now I'm in supporting for pharmaceuticals limited. So that is the reason why they need me there as well. So I'm extremely sorry, guys. No problem. Thank you so much for joining us. Siman bhai, Please just share hold the on number. for 1 minute. Yes, Gurpreet. Yeah. You don't need to share your number anywhere. You take my number 90827. 1 moment. Yeah. 90827 Yeah. 966 Mm-hmm. 41. Thanks a lot, buddy. And if I'm coming to Bombay or anytime, I'll please let you know. And if you guys are coming down to Bangalore, do let me know. We'll have a meet. Sure, no problem. Most and very thankful to you. You have whatever analysis you have done about QNet and everything, and it's very nice talking to you. Please keep joining. Sure, sure. Thanks a lot. Thanks a lot. भुवन जी, भुवन जी हैं? नहीं है। एक मिनट, ये कौन है? चाय पे, हाँ जी, चाय पे चर्चा, आइए। जी हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening. Good evening. चाय पे चर्चा जी, मेरे को एक बात बताइए। जी बोलिए। ये जो आज का बीबीसी का एक आर्टिकल आया है, हाँ आपने क्यूनेट ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? हाँ, किया था ना, 2016 में किया था। तो फिर अगर क्यूनेट के फेवर में एक छोटा सा आर्टिकल भी आता था, किसी ब्लॉग ने लिख दिया, किसी मलेशियन ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया, तो आप लोग उसको मतलब पूरी दुनिया में शेयर करते थे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह पे, राइट? मतलब बेसिकली उसका ढिंढोरा पीटा जाता था। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होता था। इनफैक्ट फेसबुक पे अगर हमने किसी के साथ पिक्चर क्लिक है, वो इवेंट में एक बार हमने दिल्ली लेकर गए थे, मुझे बोले नहीं नहीं चलो, फिर एयरपोर्ट पे इधर उधर फोटो क्लिक किए, देन आई वाज स्पेसिफिकली टोल्ड कि भाई आप ये जो लोग हैं इनको फेसबुक पे आप टैग नहीं करेंगे। मैडम, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ कि वंस सपोज आज आप क्यूनेट के बाहर हो, सपोज आप क्यूनेट में होते, अभी भी एक्टिव होते, सपोज, ठीक है, आपने कुछ एक डाउनलाइन बना ली होती, आप कुछ ग्रुप्स में होते वगैरह वगैरह होते, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक ऐसा आर्टिकल आता जो क्यूनेट के फेवर में है, ठीक है, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा है, ठीक है, तो आप उसको अपने ग्रुप्स में, अपने डाउनलाइंस में, अपने प्रोस्पेक्टिव मतलब आपने जो भी वो क्या होता है व्हाट्सएप में बनते हैं ग्रुप्स, उसमें शेयर करते कि नहीं करते? अगर अभी भी उसमें एक्टिव रहते और जैसे हाँ डाउनलाइन बना ली होती तो आई डोंट नो, पर अगर मुझे पता तभी से चल गया था कि दिस इज नॉट लीगल इन इंडिया। मैडम, वी आर नॉट ब्लेमिंग यू, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। या गुरु भाई, या इनका प्रैक्टिस था कि मतलब जो भी न्यूज आएगा तो दुनिया भर में जग जाहिर करने का करके। ठीक है, ठीक है। तो सुशील भाई, मेरे को एक बात बताइए, अगर ये जो आज का बीबीसी का आर्टिकल है, ये सच में बोलना, ये डिबेट ज्वाइन करने के पहला किसने पढ़ा? मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा? राघव भाई? जिसने पढ़ा है ना, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा यार। जिसने ये आर्टिकल आज का पढ़ा बीबीसी का, वो अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज, ताकि हम वापस से टॉपिक पे आ जाए, जो आज का टॉपिक था।
तो 3-4 लोगों ने बोला है इन्होंने पढ़ा है, तो हम एज्यूम करेंगे बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है वो डिबेट में बात करेंगे अभी, बाकी चुप रहेंगे, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर एक फीमेल ने अपनी स्टोरी बताई है। क्या बताया उसने अपनी स्टोरी में? That she has to make contacts through this dating apps. हाँ, कौन से डेटिंग ऐप? कुछ वो एक बम्बल था और एक टिंडर था। टिंडर एंड बम्बल। तो ये ऐसा मतलब कौन सा अपलाइन है या ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो बोलती है कि आपको हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट्स वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको पूरा स्टोरी पता है, ठीक है? तो अगर कोई फीमेल ज्वाइन करती है इनको, तो उसको डेटिंग ऐप पे जाने क्यों बोला जाता है? हाँ, उसको प्लस उसमें शायद उसमें ये भी बोला था कि लड़कों को अट्रैक्ट करना है, बहुत कुछ उसमें बोला था। हाँ, बट ये मतलब क्यों ऐसा क्यों? हाँ, इन अ वे मुझे लगता है कि इनको एक पैसा कमाने का जरिया चाहिए बस, कि किसी भी तरह से पैसा है अपने पॉकेट में आ जाए, कि उसके बाद तो 30 दिन के बाद उनको हैंडल कर ही लेंगे करके। एक बार पैसा आ गया जेब में तो इनको सुशील गोल भाई गोल घुमाना, तो अभी हम 10 साल से घुमा ही रहे हैं, तो अभी भी घुमा देंगे इनको। कौन है? सुशील भाई, सिनन भाई? सुशील बोल रहा हूँ। सुशील नहीं, वो यूट्यूब में लैग चलता है 10 सेकंड का। मेरे अच्छा को एक अच्छा। बात बताओ, तो आपने भी तो क्यूनेट ज्वाइन किया था ना? हाँ जी। तो आपको बोला क्या कभी डेटिंग ऐप पे जाओ करके? नहीं, तो उस समय तो ऐसा कुछ बोला नहीं था। राघव भाई, आपको बोला था कि डेटिंग ऐप पे ज्वाइन करो? नहीं, only in social media I have to do like posting the pictures and all that. They asked me to do that, but not in the dating apps. तो ये फीमेल्स को डेटिंग ऐप ज्वाइन करने के लिए क्यों बोलते हैं इन लोग? Such that they can attract males and then they can easily lure them into the business. And then they can blackmail them some way or the other, so that they can shell out more money. चाय पे चर्चा जी, मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कितने केसेस हुए इंडिया में ऐसे जिसमें फीमेल्स के नाम से पैसा लिया गया है और जब ही रिफंड मांगा गया है तो फीमेल्स ने मेल्स पे केसेस कर दिए? नहीं, तो हनी ये ट्रैप तो करके नहीं भी एक पता होता है ना, वो सब होता रहेगा। हनी ट्रैप, चलो आपको हनी ट्रैप भी बता देते हैं। बात करिए, कंटिन्यू करिए। They were नहीं, doing a kind of honey trap, exactly. At least like I have directly seen 2 cases where the upline was like firing back when they were asked for money. Like they directly said that like you were trying to molest me and all that. So yeah, they were not holding back to stoop down their personal levels, and then like they want to make money. Maybe like some people are forced to stay in that, but like yeah, they are definitely pulling innocent women into this thing, and then they are exploiting it for that. तो ये कितना एथिकली और मॉरली सही है ये चीज? 100% wrong. It's completely wrong. वी हैव वन कार्तिक भाई हमारे साथ है। कार्तिक जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। कार्तिक भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जॉइन द कन्वर्सेशन। चाय पे चर्चा जी, आपका व्यू क्या है बताइए। चलिए, आप तो फेमिनिस्ट हो, बताइए। चलो, नहीं मतलब ये वही ना, एक तरह से जो है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये पैसे की होड़ में जो है सब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। नहीं, एक्सप्लॉयटेशन ठीक है एक तरफ, ठीक मतलब गलत ही है मतलब, बट ये लेवल तक गिरना कि आप किसी फीमेल को आप बोलो आप डेटिंग ऐप पे जाओ ताकि लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, फिर वो मतलब बेसिकली दे वांट डेटा, लीड्स राइट, लीड्स। अब उसमें से अभी बाय हनी ट्रैपिंग somebody,
प्रोसीड। हाँ, तो जैसे मतलब हनी ट्रैप करके किसी को कैसे भी सेल आउट करने का, और फिर उसमें जो है कंटिन्यूअसली यू कैन क्या बोलते हैं, पैसा उनसे निकलवा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है। ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेल कर करके। सो तो फिर एथिकली इसका तो ये क्या बहुत है? गलत है। हमारे साथ एक रोहित जी है, इन्होंने अभी तक कुछ बात नहीं किया है। रोहित जी अनम्यूट करिए और बात करिए। हेलो सर, गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। बोलिए रोहित जी, थोड़ा जोर से बोलिए। सर. Actually, I don't speak or understand Hindi since I'm from No, South you India, can Tamil you Nadu. can continue in English, no issue. Yes, sir. I got actually. Good evening, everyone. Good evening, good evening. Uh, I got trapped by one of my college friend, and Rohit ji, where are you from? Chennai. Okay. Please. Yes, sir. I knew my friend since 2011. We studied college together. Okay. I got trapped by him on 2021 in the month of September, and he called me. He called me for a meetup, and I went to one place. So he introduced his girlfriend, who is already in Girlfriend, this. Yes, for what? for this business opportunity. मतलब your friend called you to meet his girlfriend Yes. We for a three. business opportunity. Yes. He didn't tell anything on the over the phone. He just called me, and he asked to come to one place. So I Okay. went there. I sat up in one cafe, and they started telling about this thing. And if you invest this much money in 5 years, we can make around 5 crores. Rohit ji, what is your educational qualification, please? Bachelor of Engineering. Okay, you've done engineering. Okay, proceed. Yes. So they told me So, that if we invest 5 lakhs today, we'll okay. get 5 crores in next 5 years. Okay. So we'll be financially freedom, like that. Lots of things they were saying. So since he was my close friend, my college friend, I knew him since 2011. I blindly believed him. So I didn't had any doubt or such things. Okay. So I gave him around 7 lakh rupees. 7 lakh rupees you gave. Yes. I When gave was 7 this? lakhs. 2000? September 2021. Okay, that is very recent. Yes, 1 year passed. 1 year back. Okay. And 2021. And after myself, my cousin brother also lost around 4 lakh rupees. So we both lost 11 lakh rupees. okay, so you mean to say you made one downline Yes, correct. of 4 lakh That rupees. also they forced me to do it. But how can If I someone force you? They did. मतलब, No, I actually don't. what they said is, if चाय I'm पे not चर्चा doing it, जी, आप जरा इनसे किशोर भाई से अपना रोहित जी से बात करिए प्लीज। ये if I'm not जरा doing it, I won't be able to make money. The first thing after entering into this business, I have to do one downline sign up. okay. So we'll be like partners, and we both can earn money like that. Something they told me, they gave me some reasons. Then only my brother got into this, and he lost around 4 lakh rupees. Rohit ji, see, whatever you are saying, I can completely understand.
but Yes. you made a point saying that it was done forcibly. Correct. Correct. I can't understand how it was done forcibly. Uh, Oh, Yeah. For brainwash. that we gave. They brainwash saying that you have been given a wonderful opportunity. You grab this chance. Next, you won't get this chance. Yes. 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 but brainwashing is not a crime, no, in India. Obviously, how can you prove it? You can't. See, if you make a statement saying कि forcibly किया, someone Hmm. forced me to do this, then it's a crime. But if we say someone brainwashed me to do this, Brainwash and influence. What I'm trying to say Influence, here yeah. is they influence you so much, and moreover, वो बहुत हम लोगों को मीटिंग के टाइम हम लोग जाते थे तो बोलते थे चाय पे चर्चा जी, रोहित जी is from Chennai, please speak in English. yeah, so not to make an eye contact, something like that. That also they used to tell us. They kind of create a sense of urgency. It's like only one opportunity is available. Either you Correct. make it or you Yes. lose it. Yes. Correct, Yes. correct. And I think they keep surrounded by you and keep you busy so that you will not occupied and you will not go or talk to anyone. And they They make forced me. sure that And They forced me to Karthik, call people on daily basis. Karthik, one thing I want to ask: did they add you into any WhatsApp groups and bombard you with lots of welcoming messages? Yes. 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 I am into. I am into. Okay, that will be very helpful to you if you are going to file a police complaint. So keep all the chat transcripts intact. The groups are still active. Yeah. Keep them. Okay, you can, if you are in Yes. any of the WhatsApp groups where you got a link for this message, right? You can message me or Guru Bhai, okay, about these particular groups, okay, and then we can tell you how to prepare your legal documentation for filing it and all that. Okay. Yeah, I'm sorry to interrupting in between. That's one thing I wanted to tell you before I forget. Go ahead, please. Yeah. And after that, they forced me to call people on daily basis from my contact list, from my social media friends, my college friends, my school friends, my co-working colleagues. Hello. yeah, we can hear you. Yes. Yes. So on daily basis, we need to call 5 or 10 people, and we need to tell them that I'm into this, I'm making this much money, I was like that, now I'm like this, blah blah blah. We need to call them, we need to speak, and we need to update to the upline that I called these people, they gave this type of response, like that. We need to update to them. Based on that response, they'll give us some ideas. Here as So well, Hello. you need every to talk to them like this. mm. So every day they are calling you means after your office hours and they are keeping Yes. you up to late Correct. till 10 or 11, 1 Correct. p.m. so that you can so Sometimes it will tired be and like you can just go and sleep. yeah. Sometimes it will take around 2 o'clock in the morning, early morning, 1 o'clock, 2 o'clock. Yeah. So basically that kind of strategy they follow. So they are keep you busy up to 2 o'clock every day. Correct. Morning you again Correct. tired and you are not having any idea to go and search anything and you will be occupied and again next night is the same story. Yeah. This thing will keep on happening on daily basis. Either it is a Oh, juice shop, cafe, or a mall. That food court will be there. No. okay. Anyway, This weekly kind of meeting stuff. happens in Chennai. Uh, uh, yes, it is happening. But nowadays, I'm not sure where it is happening. But every Saturday, these people will gather at one place, like park or some cafe, Hmm. like that. But every 2 months or 3 months, they used to conduct a meeting in a hotel. ये कैन आई इंटरप्ट? एक हमारे Yes, साथ sir. है ना, शकीर जी हैं, ये बार बार जुड़ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। शकीर जी अपने आप को अनम्यूट करिए और इफ यू वांट टू स्पीक
Please. Shakir is also from Chennai. Yeah, but he's not unmuting himself. He's just joining and leaving. Shakir ji, आपको अगर if you can listen to our voice, please unmute yourself and join the debate. So in your active WhatsApp group today also you get a message for this kinds of meeting? Yes. Till now I'm getting. Welcome Shakir ji. Welcome. Please speak. Shakir ji, आप you're from Chennai, right? Yes, I am from Chennai. The Please, message, please. Rohit is talking, right? I am the one who's sharing this link to Rohit. Sir, actually, he's the one who shared this invite link, everything. Okay. So Then you only I both are got to in know. same one team. They called one team name No. also. Is they given I you the got to team know name Shakir. anything? No, sir. Actually, I got to know Shakir from yesterday. Okay. Yeah, I didn't know him before. Mhm. So So in today Chennai only. they follow any team name? Like any team name is given to you Yes. WhatsApp group. Yes. What is the Infinity. team name? Infinity. Infinity. Okay. Yeah. And one other group name is 10 Weeks of Madness. So have you asked any question about them? Now you know that this is a fraud and you have already must be read so many news No, in no. the Google also. Have Yes. you asked? When he Yeah. started, yeah, when he started asking these things to my referrer, Hmm. he told me that for each company there will be negative feedbacks. The positive side also will be there. Negative side will also will be there. Like that. They used to give us some reasons. They used So to shut up. yeah. So you never ask them where is these guys? You have never seen them because No, whoever I did. talking to you on the WhatsApp group, they must be a normal common people. They must be talking in very general. So you should ask from the one superior should be come in front of you and talk to you, no? I saw those people. Who? Who's Can I people? make a point here, please? Yes, sir. Sure. Today's BBC article, just as our guest said, the upline used to say there will be plus points also, minus points also, right? Yes, sir. So if there is a minus point in my organization and someone will question me, some media person or someone will question me, am I supposed to answer that or avoid that? You should answer that first so that you can come as a clean sheet, no? So ये आज का मतलब the BBC article today says they gave an opportunity to QNet, that is Vihan, to give an explanation, but they denied to comment on the article. Because they know it is a true. If they come in front, then they will get exposed. Sir, I told you, no, sir. See, Happening in Chennai. Can I read out what they said? yes, please. See, when I did my case, no, 10 years back, around 9, 10 years back, when I started this fight, they have put all kinds of personal allegations against me and this and that. Everything is there. If you read today's article, it says, and while the company has previously publicly publicly denied the allegations, it did not respond when we asked them to comment on the accusations of money laundering and specific cases detailing the behavior of their agents.
हेलो। या गुरु भाई। मैंने जो पढ़ा सुनाई दिया क्या, कि वापस से पढ़ो? नहीं, सुनाई दिया, बट आई थिंक पीपल आर नॉट गॉट द कंटेंट्स, so that's why जो more आज people का are silent. जो आज का Sorry, in between voice was breaking. जो आज का बीबीसी का आर्टिकल आया है, ये जब फाइट हमने शुरू की थी 2013 में, तब से ये हर बात पे डिनाई करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, झूठे केसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। आ रही है आवाज मेरी? Yes. हाँ आ रहा है। हाँ। तो आज का अगर आप आर्टिकल पकड़ बीबीसी का पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, एंड वाइल द कंपनी हैज प्रीवियसली पब्लिकली डिनाइड द एलिगेशंस, मतलब इट मींस कि प्रीवियसली पब्लिकली हर एलिगेशन इन्होंने डिनाई किया है। It did not respond when we asked them to comment on the accusations of money laundering and specific cases detailing the behavior of their agents. मतलब when the BBC questioned Vihan QNet in India, it did not respond. Why? Agency in economic crimes, I guess, money laundering के लिए. So जब तक till then वो नहीं clear होता, they can might not want to comment, you know, और clear होने के कोई chances है नहीं इसमें at the moment. बट मैंने चाय पे चर्चा जी मैडम, मैंने जब ये फर्स्ट कंप्लेंट फाइल किया था, even before the FIR was registered. Correct. ठीक है, then Yeah. cases were registered in Hyderabad also, Chennai also, Delhi also, everywhere. Everywhere the company has come out openly and denied the allegations. Openly. ठीक है, they have a PR team. I have the agreements. मतलब मैं I can share the agreements के मतलब ये PR टीम को, मतलब ये कंपनी को महीने का 5 लाख मिल रहा है, 6 लाख मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, to manage the media, to do the PR activities. Because they can lure few more people public into this ना by denying all such, और वही links, उनकी favorable links ही तो share करते हैं वो लोग हर जगह. So my question is this, कि when an organization like BBC is doing an article about QNet, yes, why did not they make a comment? क्योंकि BBC जो है, it's a very old media group. It's a very old media, very topmost media house, I would say, news agency, correct? और अगर बीबीसी के उसमें अगर कुछ करेंगे तो वो उसमें भी ये लोग भी तो सामने कुछ उसके लीगल एक्शन ले सकते हैं ना. एंड उनको पता भी होगा कि अपना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या और केसेस चल रहा है, तो इसमें अगर कुछ उन्होंने बोला, सो दे विल बी जस्ट गेट एक्सपोज और माइट बी दे विल बी पार्ट ऑफ द ट्रबल. हाँ, they will invite far more trouble. ये कार्तिक नाम से 2 आईडी हैं, मतलब दोनों सेम है क्या? एक छोड़ दीजिए ना स्टेज को प्लीज. Karthik, if you are like joined as 2 different people, right? We can see 2 Karthiks as of now. What Gurubai is telling is like if it is like 2 duplicate people, you leave by creating room for another person. You got it, Karthik? Because now we have one Mr. Senthil. Actually, he's been messaging me on Facebook and everywhere. But Senthil ji, if you can hear me, your device is not connected. Basically, you have to connect a headphone and then you can join the debate. Matlab, even if I want, I cannot add you. And Karthik bhai, if both the Karthik are same, one of you exit, please. Karthik, can you unmute and speak once, please? Is it the same person? Okay, all right. I think Gurubai, why they are not fighting back is like at that point of time, maybe what I see is like at that point of time they were able to manage some people in Indian media, and then they were able to do some malicious propaganda against you. Okay. Now I think
from the victim side and with the motivation from your side and other police departments and all that, we have got more awareness as well in the people from the victim side, and there are more people able to come out as well. So even if we see that in the internet as well, whenever someone says that QNet is good, their identity is not disclosed. But as a victim, they always say that like, I am so and so person, this is my number, someone help me. But someone says like QNet is good in some internet somewhere, that they will never disclose their real identity. I think that's also one of the reasons that they will not come back and fight against BBC now. Shakir bhai, hello Shakir ji, Yes, please बोलिए unmute सर. yourself. Please unmute yourself, please. हाँ, Please, बोलिए please, सर. come and share what you want to disclose, matlab whatever you want to talk. So thing is like, Because you have last helped November us, मेरा because sign of up हुआ you, था. one. बोलिए सर. Okay, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. सर लास्ट नवंबर 22 मेरा साइन अप हुआ था सर. मैं 5 लाख इन्वेस्ट किया था इसमें. ऐसे ये बोलते थे कुछ शॉप्स आ गया आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो शॉप है ना, उसमें पोर्टल में जो भी कस्टमर परचेस करेगा उसमें से आपको आएगा कमीशन 2%. ऐसा ही मुझे बोले थे सर ये लोग, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन किया था. देन मैं रियलाइज किया फर्स्ट मीटिंग में जरूर कुछ MLM है ये. वो मेरे से साइन लिया था कुछ बॉन्ड्स पेपर वगैरह से. देन मैं प्रॉब्लम करना स्टार्ट किया था, मेरा मनी रिटर्न कर दो. वो बोले थे मैं दे दूंगा बोल के मेरा पॉलिसी पीरियड एक्सपायर कर देते. देन आफ्टर दैट वो बोले थे कि मनी कैन नॉट बी पॉसिबल टू रिटर्न. ऐसा ही चल रहा है सर. मेरा क्या 3 महीना हो गया, मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है सर. शकीर जी, मेरे को एक बात बताइए आप. हाँ. आपका पूरा नाम क्या है? शकीर खान. आप मुस्लिम हो? हाँ. ठीक है, अच्छा. रॉबर्ट जी का भी नहीं है इसमें भी. ठीक है, कोई बात नहीं. शकीर जी, आपने ये क्यूनेट का हिस्ट्री पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है सर मैं. अब उसके बाद में मुझे मालूम, मुझे पता नहीं था कि नाम क्यों क्या नहीं पढ़ा आपने उसके बारे में? वही के कुछ गोल्ड कोस्ट था, QI कंपनी ऐसा कुछ फ्रॉड करके अटक गया वो. हाँ. चेन्नई में कुछ प्रॉब्लम थे. शकीर जी, आप शकीर जी चेन्नई में से हो ना? आप चेन्नई से हो ना? हाँ चेन्नई से हूँ. ठीक है. तो अभी इंडिया में ये जो फ्रॉड शुरू हुआ, ये गोल्ड क्वेस्ट के नाम से शुरू हुआ, ये सही बात है? हाँ मालूम है सर मुझे. ठीक. और उसके बाद में उसका नाम करके चेंज किया क्वेस्टनेट. क्वेस्टनेट. हाँ, क्वेस्टनेट नाउ क्यूनेट. ओके. शकीर जी, पैसा तो ठीक है, आता जाता रहेगा, है ना? बट ईमान भी है ना. ईमान भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए. सही बात है सर. है ना? हाँ, तो सही है. क्या आपको पता है कि गोल्ड क्वेस्ट और क्वेस्टनेट, मतलब जिसका नाम अभी क्यूनेट किया गया है, इसके ऊपर फतवे लगे हुए हैं कि ये एक हराम चीज है, ये इल्लीगल है, मतलब इस्लाम के हिसाब से. क्या आपको ये पता है? मैं पता किया था सर. मैं गूगल में सर्च किया था आफ्टर दिस ट्रैप हो गई बाद में. इस फुल्ली हराम है ये 100%. बट इसके अंदर फतवा जो है ना, फतवे जो लगे हुए हैं, आपने वो पढ़े हैं क्या? नहीं सर, वो नहीं पता मतलब नहीं सर. उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये चीज हराम क्यों है, मतलब इस्लाम में हराम क्या है. मतलब आप थोड़ा एक मतलब मैं ये बात इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, हाँ ताकि सही सही. आपके जैसे अगर कोई भी मतलब जो मुस्लिम है, अगर वो उनको ऐसी कोई चीज दिखाई जाती है, तो उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है. सही. तो आपके पास मेरा नंबर है क्या, मोबाइल नंबर? नहीं है सर, मेरा नंबर नहीं है सर. आपके पास पेन और पेपर है? 1 मिनट सर. या. हाँ यस सर. यस सर, मेरे पास है पेन पेपर. मेरा नंबर आप ले लेंगे? हाँ जरूर. 90827 90827 966 966
41। ओके सर। ठीक है, तो आप हाँ मेरे को इस पे मैसेज करिए और हाँ मैं आपको देवबंद के फतवे जो है ये इस टाइप के चेन मार्केटिंग बिजनेस के अगेंस्ट, जिसके अंदर नाम लिखा हुआ है गोल्ड क्वेस्ट और क्वेस्टनेट का, कि ये इस्लाम में हराम क्यों है, ये मैं आपको ओके शेयर करूंगा। तो जरूर सर। आपकी जो फाइट है, सुनिए, कि 3 महीने हम्म से कुछ नहीं हो रहा है, आपको लीगली जो भी फाइट करना है उसमें हम आपको हेल्प करेंगे कि एफआईआर कैसे करना है। चेन्नई में हो तो चेन्नई में भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हेल्प करेंगे। बट हम्म, आप हमको हेल्प करोगे क्या? हाँ जरूर करूंगा सर, जरूर शकीर जरूर। जी, आप हमको हेल्प करोगे क्या? या जरूर जरूर सर, यस। तो देखो, आजकल व्हाट्सएप तो हर हर इंसान यूज करता है ना। हाँ हाँ बोलिए सर। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर जरूर होगे, जिसके अंदर हम्म आपको आपके धर्म के बारे में मैसेजेस आते हैं, आपके धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हम्म ठीक है, बोलिए सर बोलिए। तो आप आप उन ग्रुप्स के अंदर कम से कम ये मैसेज फ्लोट करोगे कि ये जो स्कीम्स है, ये मतलब लेफ्ट और राइट वाली, हाँ ये हमारे धर्म के हिसाब से ये हराम है, ये आराम है, इलीगल सही है, है। ये नहीं हम्म, करना चाहिए। ठीक है, हाँ। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अभी करिए, मेरी बात सुन के करिए, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा देवबंद के। ठीक है, हाँ और इजिप्ट के भी है। ठीक है, हम्म, आप पूरा उनको अच्छे से तसल्ली से पढ़ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है सर अगर जरूर। वो जेन्युइन निकले तो ये आपका फर्ज बनेगा कि आप दूसरे लोगों को, मतलब अपने, कम से कम अपने रिलीजन के लोगों को ये कम से कम वार्न तो करो, वार्निंग दे दो कि भाई ये मत करना, ये हराम है। सही सही इतना बात है। आप हेल्प कर सकते हो हमको? जरूर जरूर कर सकूंगा सर, जरूर करूंगा। ठीक है, मेरे जैसे चलो, कोई भी फंसने नहीं चाहिए इसमें। ठीक ठीक, अच्छी बात मैं चेन्नई में इधर मैं 3 आदमी है। कलेक्ट कर रहा हूँ सर, स्टूडियो ऐसे फुल मेरे दिखा तीन रहा आदमी है, समवन इज ट्राइंग। ये सेंथिल जी को निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बार बार ज्वाइन तो हो रहे हैं, मगर ये उनका डिवाइस नहीं कनेक्टेड है। तो सेंथिल जी सॉरी, और रॉबर्ट जी है। ठीक है, बोलिए, बोलिए शकीर भाई, बोलिए। हाँ जरूर करूंगा सर, मेरे मेरे जैसे किसी भी फंसने नहीं छोड़ूंगा मैं। जो भी हेल्प है मैं सर मैं करूंगा, जो भी आदमी को। कार्तिक, ये कार्तिक जी कौन है? ये कार्तिक जी ने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया है, कुछ बोलना है? कार्तिक जी अनम्यूट करिए, बात करिए। आई थिंक I told you sir, like Rohit and Karthik. Recently I met these two guys. रोहित एंड कार्तिक व्हाट? ये दो लोग है ना जो ग्रुप में टेक्स्ट करते थे, ऐसे यूट्यूब में सर्च करते थे, यूट्यूब में ग्रुप आता था ना, उस ग्रुप में मैं भी ज्वाइन था। ये लोग के साथ मैं बात करता हूँ एक 2-3 डेज से, इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या प्रॉब्लम, मैं शेयर तो कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कार्तिक जी को बोलिए ना अनम्यूट करके बात करें, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, जैसे भी करें, मगर करें ना। हाँ हाँ मैं टेक्स्ट करता हूँ सर से। Sir, actually Karthik is unmuted, but his voice is not audible. Hello, sir. या कार्तिक जी बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, टेल मी। Studying in nursing, sir. नर्सिंग। Coming only. I joined last December 2020, December 15th. So, लास्ट ईयर December 15th you joined yes, yes, sir. Yeah, signed. and you are from Chennai. Yeah, Chennai only. Okay, who made you join? Yeah, I now playing. Karthik ji, your voice Karthik, is not clear, no, you are not in network, you just Hello, sir. try to connect to a Wi-Fi or come little outside somewhere where you get a good network coverage.
Hello, sir. Guru Bhai and team, I'm sorry. Actually, my battery is draining off so quickly, and I'm traveling now, so I'll have to drop off. I will join again. Okay. No problem. Please leave the room. Okay. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you for coming. கார்த்தி பேசுங்க உங்க இஷ்யூ சொல்லுங்க. मेरे ख्याल से वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था इसको समराइज करते हैं और स्ट्रीम को खत्म करते हैं। सुशील भाई अनम्यूट करिए अपने आप को। यस गुरु भाई। ये जो आज का जो टॉपिक था इस न्यूज आर्टिकल के बारे में, इसको समराइज करते हैं और इसको खत्म करते हैं आज की स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग को जल्दी होगी क्योंकि 2 गेस्ट जुड़े हैं बट इनका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इनको ऐड भी नहीं कर सकता, तो मैं इनका क्या करूं? नहीं अब तो मतलब ये आर्टिकल का हिसाब से तो जो दिख रहा है ये तो एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। तो जिस तरह से किसी को भी डेटिंग ऐप पे करना या मतलब इस तरह से अटकाना फंसाना, ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। और जितने जल्दी ज्यादा से ज्यादा ये अवेयरनेस और ज्यादा फैलेगा तो ही ये बेटर होगा फॉर दी एवरीवन्स बेनिफिट। तो सुशील जी एक बात बताइए कि हमने एक छोटा सा एफर्ट लिया है कि लोगों जी से बात करना शुरू किया है। क्या है, पहले हम जो है ना मतलब कैसे हम लोग कैसे मिलते थे कि संडे को हम एक सेशन प्लान करते थे, लोग बेचारे दूर दूर से आते थे और उसके अंदर पूरा दिन निकल जाता था। तो अभी ये जो एक छोटा सा एफर्ट लिया है कि लोग हमसे आए बात करें, वो अभी जैसे आप देखो चेन्नई से लोग आ रहे हैं, बैंगलोर से लोग आ रहे हैं, एंड वी आर टॉक मतलब वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर, राइट? या तो ये एफर्ट क्या सही दिशा में जा रहा है? मतलब इज इट द करेक्ट डायरेक्शन? यस इट इज अ करेक्ट डायरेक्शन एंड इट इज अ गुड स्टार्ट आई फील। क्योंकि धीरे धीरे अभी शायद लोग कम दिख रहे हैं बट आगे जाके मुझे लगता है ये संख्या नहीं बढ़ेगी। कम कहाँ सुशील भाई, कम कहाँ, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन वो भी ट्रायल रन है और आज हमारा स्टूडियो फुल दिखा रहा था क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मुझे यहाँ बैठ के दिख रहा था कि अच्छा अच्छा, स्टूडियो नहीं मुझे मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे लगा था हाँ 10 या नहीं 15 का ही लिमिटेशन है शायद। 10 का है क्योंकि वो पेड है ना। देखो कैसा है अच्छा इसका अच्छा। जो स्ट्रीम यार्ड का जो फ्री वाला वर्जन है ना, वो स्टार्टिंग में यूज किया था और अगर ओके पेड लेते हैं महीने का तो उसका कुछ 2100-2200 रुपया जो भी खर्चा होता है मैंने किया है उसका पेमेंट। तो एट अ टाइम ओनली 10 पीपल कैन बी ऑनलाइन ऑन द स्ट्रीम यार्ड। बट ओके ये आज वो मतलब तीसरे दिन ही मतलब 10 से ज्यादा मतलब लोग जुड़ चुके थे हमारे साथ। गुड। हाँ, तो इसी पे हम कंटिन्यू करें कि कैसे क्या मतलब क्या करें नहीं हम? नहीं ये कंटिन्यू करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और अवेयरनेस भी के लिए बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट इट्स कंफर्टेबल टू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड टॉक और पूरा ज्योग्राफी कवर होता है पूरा इसमें। हाँ नहीं, मोर ओवर अभी इसमें एक्टिव अभी ये जो नया ईडी का अभी जो हुआ है ना, तो वी शुड क्या बोलते हैं, एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्प्रेड मोर अवेयरनेस। नहीं बट इसमें अभी क्या है लिमिटेशन, सपोज 10 का, अभी एवरी टाइम 10 नए लोग उसमें आने चाहिए, उनको समझना चाहिए एंड दे शुड एबल टू स्प्रेड नो। हाँ नहीं, पर इसके वही ना, इसके लिए सुशील भाई एग्रेसिवली उसमें वो ऐसा है, ऐसा 10 का फेसबुक लिमिट पे नहीं है। ये जब स्ट्रीम ऑनलाइन यूट्यूब पे होती है ना, तो उसमें 2000 लोग 5000 लोग भी जुड़ सकते हैं। बट ओह अभी वो लेवल पे हम गए नहीं है। नहीं नहीं ठीक अच्छा है, गॉट इट। हम्म? और फिर उसमें से जो डिबेट पे आना चाहता है, जो बात करना चाहता है, उसको हम स्ट्रीमयार्ड का लिंक शेयर कर देंगे, वो आएगा, ज्वाइन करेगा, बात करेगा अपना। हाँ उसमें मुझे लगता है गुरु भाई लोगों को क्या डर रहेगा ना, क्योंकि जैसे क्यूनेट के बारे में कोई भी फेसबुक वगैरह पे बोलता है तो उन लोग डराते हैं ना, जैसे समन दे देंगे या ये दे देंगे ये कर देंगे। तो इसके लिए वो कंफर्टनेस थोड़ा लोगों को पहले आप थोड़ा सा बताएंगे देंगे तो
और भी थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आएगा और दे कैन भी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रीम यार्ड है और ये जो स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? गुरुप्रीत नहीं कर रहा है, हमारी एसोसिएशन कर रही है, बराबर है। हम्म। और अभी जैसे आपने ये लिंक पे ज्वाइन किया, जी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं सुशील जी। हाँ जी। आप स्ट्रीम को छोड़िए और रीज्वाइन करिए अलग नाम से। हाँ नहीं, मैं समझ गया कि आप कोई भी नाम डाल सकते हैं और ये कर सकते, अननोन भी और कर सकते हैं, दैट्स फाइन। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप आपका कैमरा चालू रखिए, कुछ भी करिए। इनफैक्ट हम्म। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ये भी आता है कि भाई प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, ऐसा करके। या सो देखा मैंने। तो उसके बारे में मैक्सिमम ये किया जा सकता है कि आज का स्ट्रीम खत्म होने के बाद में एक हम्म। पैराग्राफ बना के हाउ टू यूज स्ट्रीम यार्ड, how to protect your privacy in case you don't want to disclose your real name, you don't want to open your camera, वो कर सकते हैं। हाँ नहीं, वही डिस्क्लेमर जैसा एक कॉल के शुरू में ही बता देंगे ना, और बीच बीच में चैट में डाल के छोड़ देंगे, बीच बीच में एक आधे आधे घंटे में, तो जिसको पढ़ना होगा पढ़ते बैठेगा। एंड मोर ओवर वी हैव अ लिमिटेशन के अगर जिसको करना है वो तो कैसे भी करके करेगा, ठीक है। हम सबको तो नहीं रोक सकते हैं, पर कोशिश जरूर कर सकते हैं कि भैया ठीक है, डोंट गेट इनटू दिस। अभी इसमें रेगुलरली इसका एक अवेयरनेस करना है, तो जो बेस्ट पॉसिबल है ये फेसबुक उस पे ही जाके कर सकते हैं। और आई थिंक फेसबुक पे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ही, एंटी क्यू नेट ये वो सब, आई हाँ थिंक सब सो। है। चाय पे चर्चा जी, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जी जैसे मतलब आप एक एग्जांपल देखिए कि हम लोग ने स्ट्रीम प्लान किया 9 बजे का, समझो मैंने प्लान किया करेक्ट। आर्बिट्रेरी, और 7 बजे मैंने मैसेज सर्कुलेट किया, ठीक है। हम्म बट हम्म आज हमारे स्ट्रीम में ऐसे लोग जुड़े हैं हम्म अलग अलग सिटी से जो हमारे ग्रुप में नहीं है। हम्म। तो मतलब बोलने का मतलब मैसेज तो स्प्रेड हो रहा है ना। शकीर भाई क्या? अपने करेक्ट। आप को अनम्यूट करिए, शकीर भाई प्लीज। हाँ बोले मैडम, बोले सर। शकीर भाई बताइए, आपको हाँ, मतलब आपको ये आज आज का जो ये स्ट्रीम होने वाला है, ये डिबेट होने वाला है, ये मैसेज आपको कहाँ मिला? मतलब आप पर्टिकुलर ग्रुप का नाम मत बताइए भले, बट आपको कहाँ मिला वो? सर आपको मुझे किसी ने मिला था। फॉरवर्ड किया था या आप वो ग्रुप में थे, कैसे? नहीं, मैं वो ग्रुप में था सर। मेरा मैसेज मैं रोहित एंड कार्तिक को फॉरवर्ड किया था तो ज्वाइन करने के लिए। नहीं, आपको ये ग्रुप मैसेज कहाँ से मिला, मतलब कहाँ, टेलीग्राम में कौन सा मिला था, ग्रुप? मैं ग्रुप में हूँ सर, वो चालू ग्रुप में हूँ मैं। आपकी आवाज व्हाट्सएप कट में हो गई, या कौन? फेसबुक में? टेलीग्राम टेलीग्राम में। अच्छा टेलीग्राम में, ओके या ओके। अच्छा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है? टेलीग्राम में तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे टेलीग्राम में मिला था मैसेज, इसलिए मैं दो लोग को शेयर किया था, रोहित एंड कार्तिक को। शकीर और भाई, अ, सुशील जी और चाय पे चर्चा जी, ऐसी बात है कि टेलीग्राम पे अभी तक हमने कोई ग्रुप बनाया नहीं है क्यूनेट के मैटर के लिए। हमारा हाँ जो भी है वो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, बस इतना ही है। फाइन, सो वी कैन गेट यू एडेड इन टेलीग्राम ग्रुप ना। अरे बाबा, पॉइंट इज दिस के दैट मैसेज है वेंट ही टू नहीं टेलीग्राम। टेलीग्राम, वही क्या मुझे भी बोला, फिर पता से नहीं था बताइए। टेलीग्राम में, नहीं टेलीग्राम में ग्रुप है करके मुझे भी पता नहीं था। और अपना ये हाँ मैसेज टेलीग्राम पे जा रहा है, मतलब अवेयरनेस जा रहा है कहीं तो। दैट व्हाट गुरु भाई आर ट्राइंग टू से। चलो तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। हमको थोड़ी ना, हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, जो भी है चलने दो जैसे चलता है। हावेवर पीपल आर गेटिंग एक मैं। टू नो अबाउट इट। यस यस। शकीर जी, you have taken my mobile number, right? बोलिए सर। You have already taken my mobile number, right? यस यस सर, मेरे पास है। Please message me that Telegram, whatever, यस यस है सर मेरे पास। because I also want to see where it went. हाँ करेंगे सर। हाँ हाँ, सेंथिल भाई मैं आपको हैं, स्क्रीनशॉट भी सेंथिल भेजूंगा जी सर। है, ये बार बार जुड़े हैं। सेंथिल जी प्लीज यू कनेक्ट योर डिवाइस, यू हैव टू
connect a headphone and a mic to your laptop or your mobile, then only you can talk to us, please understand. Okay. और भूषण जी तो चले गए हैं, भुवन भुवन जी करके आए थे, इनका 50 लाख रुपए डूबा है ये बता रहे हैं। बट ये काफी रिसेंटली हो रहा है, मतलब 21 आया, कोई तो नवंबर 22 की बात कर रहा है, दिसंबर की बात कर रहा है, और 21 मतलब ये अभी भी इतने फोर्स में चल रहा है। देखो यार सुशील जी, मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं, लोग आए, मैंने एक खाली मैसेज डाला हूँ, लोग आ रहे, लोग जुड़ रहे, लोग बातें कर रहे, पीपल आर कमिंग एंड टॉकिंग एंड शेयरिंग, ठीक है। नहीं नहीं, अपने लिए भी एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना, ये मतलब स्टिल ऑन, मतलब Sir, sorry अच्छी to बात है यार। या रोहित जी, व्हाट वर यू टेलिंग? रोहित जी बोलिए। Yes, sir. Even this minute, those people will be on meetings or will be on phone calls. I know where there will be. I know what they will do. रोहित जी, Still happen. It is still happening in Chennai, sir. It is still happening here without any issues. I think it's all the places. Now, why can we only say it Chennai? is happening all across India? सब जगह हो रहा है. Exactly. Yes, I understand. But in Chennai, they are not facing any issues or they are not afraid of anything. ठीक है ना, तो that's what I mentioned some time back कि we cannot stop each and every person from getting into this, okay? But by being actively doing this activity, we can spread awareness. अभी उसमें जाना नहीं जाना वो तो एक इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है ना, you cannot stop them. फिर आगे जो होगा सो होगा, he will face जो भी रहेगा, either he will work or he will be like one of the victims like us. या दो ही पॉसिबिलिटी है ना इसमें होने के लिए भी, either he will do business or he will be a victim like us. So you cannot stop, but at least we can spread an awareness by doing this activity regularly. Yes, sir. And Guru sir, I have one concern. Yeah, please. Yes, sir. While we got into this, no, we signed some documents. Yeah, that affidavit that you signed, no, on a stamp paper. Yes, sir. One bond kind of thing and another 5 papers. Yeah, like yeah. declaration. So your uplines, they basically, threaten you or blackmail you, okay, you saying, okay, you have already signed the bond and affidavit and you cannot do anything legally now. Yes, Against correct. them. Yeah. Now just let me add one more. सुशील भाई, आप क्यों छोड़ के जाते हो हमको यार अकेले? अरे वो मैं बैक करने जाता हूँ तो एग्जिट हो जाता है, फिर आ जाता है। Same with me. मेरे भी वही हो रहा है. हमको ये सब सीखना पड़ेगा ना। अरे क्या वही तो। अरे मत करो ना, मत करो ना बैक। अच्छा ठीक है, चलो मुद्दे की बात करो अभी। रोहित भाई, the person who referred me, no. Rohit bhai, you have asked me a question. Let me reply to it. Whoever made you join, he made you sign some documents, affidavit and bond and all those things, right or wrong? Correct. In that, whatever you signed, is it mentioned that they have been already prosecuted in the past? No. Is it mentioned that they are facing investigation under? We have one Mr. Manjunath. Please unmute yourself, Manjunath ji. Please unmute yourself and join us. In whatever documents you have signed, are the criminal cases mentioned? No, sir. No, sir. Okay. Is it mentioned? Is it mentioned that the government of India has initiated winding up proceedings against this company, saying it is a fraud? No. So, whatever document someone made and got your signature, Yes, okay, I believe it was on a stamp paper.
Yes, one stamp paper and other 5 papers, like some declaration, some kind of things. Yeah, but I believe it was on a stamp paper. Yes, sir. Correct. Yes, yes. Tell me one thing. Did you go and buy that stamp paper? No, no, sir. Who bought it? The person who referred me. So, whoever made you sign on that paper, Yes, sir. did he disclose all the correct facts before taking your No, signature? no, it is not. Did did that applicant disclose the checkered past? Like right now it's QNet. Previously we were Gold Quest. It was QuestNet. All these things. Did Sir, that of person course, disclose? Did that person disclose in that same paper that SFIO has already prosecuted them? they never told us the company name. Rohit ji, Not even one please time. ask my specific. I am asking you a very specific question. Please reply to it. Yes, sir. At the time of signing of that affidavit, Manjunath ji, please 1 minute. We'll speak to you also. Rohit ji, at time of Yes, sir. signing of the document, and in the document, did your so-called applicant disclose the criminal uh, cases pending? No, sir. Nothing like Okay. that. Did they disclose that government of India has taken action to wind up the company? Means No, this sir. company has to be shut down. No, no, sir. Okay. So that document, in that document, there is suppression of facts. Yes, Yes, yes. complete facts were not disclosed to you. Correct. Uh, Say, for example, I take 500 rupees from you Okay. without disclosing the complete facts, right? Yes, yes, sir. Correct. So, am I cheating you or not? Definitely, sir. You are cheating. So, you need not worry about those documents. Okay, sir. Whenever you are proceeding legally, Yes, sir. let them bring those affidavits or bond or whatever they have made you sign. Mm-hmm. You will get your answer. Don't worry about that. Okay, sir. It is meaningless. Okay, sir. Because that is what they are saying to everyone that you already signed, you cannot do anything. If you go legally, also you cannot do anything since you signed in all these documents like that they are saying. So that is why I had this concern. Rohit ji, Rohit bhai, what I'm telling you is when they produce the document saying so and so before any authority in police or court or anywhere, just take a copy and it will go against them only. Okay, sir. I'll give you a small example. Sure, sir. Sure, sir. Okay. Now, suppose I convince you to do a illegal act. Say, I'll tell you, go and murder that guy. Mm-hmm. Okay? And I'll make you sign a document also Okay. saying that murder is not illegal in India, Mm-hmm. and you will commit the murder. Yes. On who told you to commit the murder? You. So at time of when the police action will start or whatever action will start, I will come up with a document in which it is written that I, Gurupreet Singh Anand, dated so and so, I informed Mr. Rohit that committing murder is not illegal. Understood.
whatever murder he is doing on his own will. So do I get away from the crime I'm let off? No, sir. So don't worry about that document. We have already discussed it before 10 times, but this is the first time we are discussing it online. It has no value. It has no legal value. Okay, Okay? sir. Okay, sir. I'll give you case laws on that also if need be. You Okay, read Indian Contract Law, Contract Act, you'll understand. Okay, sir. Anything else? No, sir. Shakir bhai, If anything, I'll reach out to you. बोले सर शकीर भाई सलाम दुआ करो कि सही 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 ये जो आपका फालतूगिरी पॉइंट चालू में है नोट कर रहा हूँ सर आपका इसको, पॉइंट हाँ जो भी इसको है ना ये जो नोट कर रहा हूँ फालतूगिरी चालू है इसको बंद करो कम से कम, ठीक है? सही सही और आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको फतवे दे दूंगा, सब शेयर करूंगा, ऑथेंटिक है और देवबंद के हैं, ठीक है? और सर उसका लिंक भी दे दूंगा, आप खुद चेक कर लेना। और आपकी जो भी बिरादरी है, मतलब आपकी जो भी उम्मा है, उनको बताना कि ये चीजों में मत जरूर पढ़ो, जरूर जरूर ये सर हराम है। जरूर। सही है राम सर ठीक है, थैंक यू बोलिए। नेक्स्ट करूँगा और कोई है चाय पे चर्चा जी? आपको कुछ पॉइंट बोलना है तो बोलिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। सुशील भाई, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर वाइंड अप करते हैं। लेट हो रहा है, 10:30 हो गया। आजकल मैं नहीं, गुड बॉय सब तो बन कवर हो गया हमारी तरफ से, सब कवर हो गया सर। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते रहिए, गप्पे मारेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? और ठीक है। कुछ पॉजिटिव निकले इसके लिए दुआ करो, प्रेयर करो, आप जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हो, ठीक है? जरूर जरूर सर एक्टिव रहो और लोगों में फैलाओ कि भाई ये चक्कर में ना पड़े। इसके बावजूद भी अगर पढ़ते हैं देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट एटलीस्ट एक बार कोशिश करना चाहिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। चलो एवरीवन, गुड नाइट, जरूर जरूर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक मिलते यू। रहो। कल भी एक टॉपिक लेके आएंगे अच्छा सा। थोड़ा टाइम निकालो, अपनी जिंदगी का एक एक घंटा निकालो रोज 9 बजे, ठीक है ना? जब आप ये क्यूनेट वगैरह कर रहे थे तो भी तो आप मतलब टाइम निकालते ही थे ना, रात को जाते थे, सुबह जाते थे, मीटिंग्स करते थे, सब कुछ करते थे, कॉलिंग करते थे। तो अभी पहले जैसे तो है नहीं कि मैं आप लोग को बोलता हूँ इधर आ जाओ उधर आ जाओ, बट गप्पे मारने तो आओ 1 घंटे के लिए कम से कम। ठीक है गुरु। यस सर गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट सर Hello? Sir? Yeah. Sir, sorry to disturb you, sir. Yeah, we are actually backstage now, and Okay. whatever we will talk, it will not go. No one will hear it. It's just between you and me. That's not a problem, sir. Sir, hello? Yeah, proceed.